as an example for the paging scheme, consider a computer system that uses XYZ processor and the processor supports logical memory with a page size of 16 bytes. Instruction size is 4 bytes. The width of the address bus for this particular processor is 16 bits, while the data bus is 32 bits. यानी कि तमाम reads और writes 4 bytes में हो रहे हैं. The total physical memory of the given computer system is 64 bytes. Now consider a process P1 that is running on this computer system and it executes these instructions. Now these instructions are given in assembly language and the addresses here, for example, in this first instruction load R1, this address is given in hexadecimal, right? So the 4 instructions are load into R1 the contents from the main memory at this particular logical address. This is logical address because the addresses that a program sees in a dynamic addressing scheme are logical addresses, right? And the addresses which are seen by the CPU are also the logical addresses. MMU's role is to transform those logical addresses into physical addresses, right? So the first instruction is a load into R1 instruction from this logical memory location. Then load into R2 the contents from this logical memory location. Then add R1 and R2 into R1 and then store the contents of R1 into this 0038 logical memory location. So the question is, what would be the contents of the physical memory after execution of these instructions? To explain, I need to show you the state of the physical memory and the page table for process P1 before execution of this code. Right? So here's your physical memory. At the top, we have process P1's code loaded over here, and then these are the contents, the other contents, including data and instructions. Right? Then we have here a page table for process P1. P1 का पेज टेबल है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 0 पे लोडेड है और ये एक वैलिड फ्रेम है. पेज नंबर 5 के लिए फ्रेम नंबर 0 मेंशन्ड है, लेकिन इट्स एन इनवैलिड पेज बिकॉज द ओनली वैलिड पेजेस आर पेज 0, पेज 3 and page 2, as also page 1, right? So what's given over here is we have the page size of 16 bytes, instruction size is 4 bytes, and the width of the address bus is 16 bits. Address bus की width हमें ये बताती है कि logical address कितने bits का होगा, क्योंकि logical address ने address bus के ऊपर travel करना है CPU से MMU की तरफ. तो लॉजिकल एड्रेस में 16 बिट्स हैं और हमारे पास फिजिकल मेमोरी टोटल 64 बाइट्स की है. तो अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगी, मेमोरी को क्या एड्रेसेस मिलेंगे और क्या वो ट्रांसलेट करके फिजिकल एड्रेसेस को किस तरह से एक्सेस करेगी, ये हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं. तो पेज साइज क्योंकि हमारे पास 16 बाइट्स का है, तो इसका मतलब है कि उन 16 बाइट्स के पेजेस को के लिए आपको कितने ऑफसेट बिट्स चाहिए होंगे. 2 raised to the power of 4 is 16 या log base 2 of 16 is 4. That is 4 bits are required to represent the offset. और हमने देखा था कि आपके पास जो least significant end होता है वो आपके ऑफसेट बिट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे ये जो 16 बिट्स हैं उसमें से हम राइट मोस्ट 4 बिट्स को एज ऑफसेट बिट्स कंसिडर करेंगे
और बाकी के 12 बिट्स जो हैं वो आपके पेज नंबर को डिनोट करेंगे। और क्योंकि ये आपके पास हेक्साडेसिमल एड्रेसेस हैं, तो हमें पता है कि एक हेक्सा डिजिट 4 बिट्स के बराबर होता है। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड इनटू R1 फ्रॉम दिस 001C लॉजिकल एड्रेस की है कि R1 में जो भी इस लॉजिकल एड्रेस पे कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनको लोड कर दिया जाए। तो इसको अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें पेज नंबर और ऑफसेट हमें आइडेंटिफाई करना होगा ताकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर और ऑफसेट मिल सके। तो क्योंकि हमारे पास जो राइट मोस्ट 4 बिट्स हैं या पहला आपके पास जो हेक्साडेसिमल डिजिट है फ्रॉम द राइट एंड ये ऑफसेट का है, तो बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं वो पेज नंबर के होंगे। So page number here is 1 and offset is C. तो आप आइडेंटिफाई करें पेज टेबल में से इस पेज नंबर 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रेम कौन सा है। तो पेज 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रेम है 3 एंड इट्स अ वैलिड फ्रेम। ठीक, तो फिजिकल एड्रेस अब कंप्यूट करना होगा मेन मेमोरी यूनिट को। तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा? पेज नंबर की जगह आप फ्रेम नंबर रिप्लेस कीजिए। तो फ्रेम नंबर 3 है और ऑफसेट सेम रहेगा क्योंकि पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होता है। सो फिजिकल एड्रेस वुड बी 003C। तो 003C को फिजिकल मेमोरी में देखिए कौन सी लोकेशन है, द लास्ट लोकेशन। और वहाँ पे क्या स्टोर्ड है? 004 that will get stored into R1। इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है 4 जो कि R1 में चली जाएगी। अब नेक्स्ट इज लोड इनटू R2 द कंटेंट्स फ्रॉम लॉजिकल मेमोरी लोकेशन 0074। अब इसको भी आपको ट्रांसलेट करना होगा फिजिकल एड्रेस में। सो पेज नंबर here is 7 and offset is 4. Corresponding frame number that we identify from the page table is 2 and it's a valid page. Therefore, the new physical address that we have computed would be frame 2 and offset remains the same, that is 4, and the address is 0024, which is in the physical memory over here. और यहाँ पे क्या कंटेंट्स हैं? जो भी वो कंटेंट्स हैं उनको R2 में स्टोर करवाना है। सो R2 गेट्स 5, ये 5 R2 में आ जाएगा। Now R1 has 4, R2 has 5, and the third instruction is add into R1 the contents of R1 and R2. So after execution of this instruction, R1 gets 4 plus 5, that is 9. And the next instruction is a store instruction. Store क्या करती है? Logical address को, जो logical address given है उस logical address पे register के contents को store करवाती है। So to execute fourth instruction, what we need to do is we need to first compute the corresponding physical address after identifying the page number and its corresponding frame. So here page number is 3 and offset is 8, hence the physical address would be corresponding frame number 1 followed by offset 8. So this is the physical address which is here in the physical memory. So the instruction was a store instruction, so R1 would get the contents. So the contents of R1 would get stored into this location 0018. तो R1 के contents इस वक्त क्या हैं? 9. So ये 9
0018 पे जाके स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि ये आखिरी इंस्ट्रक्शन थी तो आपकी अपडेटेड स्टेट ऑफ फिज़िकल मेमोरी ये ही है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। थैंक यू जी।